Welcome to Ticker TV. Today's topic for 3-minute news analysis is RBI's PIDF. Let's begin. The Reserve Bank of India recently announced the creation of rupees 500 crore Payment Infrastructure Development Fund PIDF. इसका पर्पस है डिप्लॉयमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल, जिसे हम पॉज मशीन बोलते हैं, एंड प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर for enabling both physical and digital modes in Tier 3 to Tier 6 centers and Northeast. Tier 3 to Tier 6 cities according to 2011 census are whose population ranges from less than 5,000 to 50,000 people. Now इसमें Central Bank will do initial contribution of rupees 250 crore and remaining contribution will be from card issuing banks and card networks. This fund will improve development of digital payment ecosystem in northeast and rural districts of India. Over the years, the payment ecosystem in country has evolved with a wide range of options such as bank accounts, debit credit cards, mobile payments, etc. Now, इसका कारण क्या है? Why they are setting up PIDF? डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने काफी बार एमडीआर चार्जेस को स्ट्रीमलाइन करने का ट्राई किया है. मोस्ट रिसेंट अटेम्प्ट वाज इन जनवरी 20 व्हेन आरएफएम अनाउंस्ड दैट वेविंग ऑफ मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऑन रुपे एंड यूपीआई ट्रांजैक्शंस. उन्होंने सर्टेन रेंज भी रखी लाइक 50 करोड़ टर्नओवर एंड अबव. दिस जीरो एमडीआर अनाउंसमेंट हैड रेज्ड कंसर्न्स एक्चुअली बाय इकोसिस्टम प्लेयर्स एंड इंटरमीडियरीज हु प्रोवाइड सर्विसेज. नाउ थोड़ा ज्ञान की बात, ये एमडीआर क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट और एमडीआर इज अ फी बेसिकली चार्ज बाय बैंक्स फ्रॉम द मर्चेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग पेमेंट सर्विसेज. हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई शॉपकीपर्स आर अवर्स? फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल खरीदने जाते हैं. लेट्स से यू आर बाइंग सैमसंग मोबाइल एंड फॉर एग्जांपल यू फाइंड आईसीआईसीआई बैंक पोज मशीन फॉर स्वैपिंग डेबिट और क्रेडिट कार्ड एंड पेमेंट मीडियम है वीजा और मास्टर. Now Samsung shop will ask you first priority as cash because if he uses ICICI POS machine, he has to pay MDR fee to bank. जब आप डिजिटल पेमेंट करते हो, there are many counterparties involved. These include the customer, the merchant, banks, and the payment service provider. Now these parties invest money actually on infrastructure as well as take risk of credit. क्योंकि कस्टमर ने अभी पेमेंट किया है, but then it takes time actually to reach all these companies, and this MDR cost helps to offset to an extent. Now all these intermediaries will reluctant to put their infrastructure and credit risk for deploying their machines in rural zones as the cost of maintenance will be higher there. But government has to build strong digital payment system. First big boost for digital payment system we everybody know was in demo time. Now even in COVID time, most of people prefer digital payment rather than physical transaction. So let's hope for the best for this PIDF. This PIDF will be governed through an advisory council and managed and administered by RBI. Now today's quiz. Last year, well-known report was published on deepening digital payment system. Who was heading this committee? Thank you for watching Ticker TV. Please like and subscribe our channel. Thank you very much.